My dear students, welcome you again to our economics class. So, last class we discussed basic concepts of economics. This class also we discuss the basic concepts. Last class one concept we have discussed, that was want. Today we read three more basic concepts: goods, value and price. Okay. So, we start. What are the contents of this chapter? What we read in this context? So, first we read what is good, how it is differ from others, types of goods, distinguish between different goods, how one good is different from another, we will discuss. Value of the commodity, value of the anything to be measured, price, concluding and probable questions of this chapter we will discuss one by one. So, let us start, dear students. So, first what is good? What do you think? Normally goods means we think the things which satisfy human wants. The things may be in form of material or non-material, but which helps to satisfy our human wants, called as good. So, if the things are material, they are called goods. If the things are non-material, they are called services. So, goods and services are same thing, only the difference is one is material, one is visible and tangible, another is non-material, invisible and intangible. So, this is the difference. Goods and services we can mean same in economics, only difference is material and non-material. So, what are the material things? What are the goods in economics? Book, bike, dress, furnitures, houses. So, these are called material goods or material things, they are called goods. We can see this, we can touch this, we also transfer these from one place to another. So, they are called goods. On the other hand, which are invisible, intangible, आमे ताको देखि परिबा ना कि छुई परिबा नहीं, केवल we can feel only, अनुभव करि परिया. So, that is teachers teaching. Doctor's treatment, lawyers law, आमे doctor को देखिला, treatment को. So, that is invisible for us. So, that is called services. So, goods and services are much more essential in our life to satisfy our needs, should satisfy our wants. So, whatever want we have to satisfy, we need goods and services. Without goods and services, not a single want can be satisfied. Are you clear? So, what are the goods? How many types of goods, how many categories of goods we are getting in our day to day life, we are using in our day to day life, we will discuss one by one, and how they are differ from one to another, very clear. We will move to next. Yes, one more thing is there, goods and commodity. Normally we think goods and commodity are same, no doubt. Commodity गोटे शब्द शुणी तुम पे जे सी गुड्स जहाँ द्रव्य, कमोडिटी द्रव्य आम कहते. बट इन इकोनॉमिक्स ए लिटिल बिट डिफरेंट इन बिटवीन देम. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? I just tell one example, then you will clear the difference. So, food prepared in your home, that is called good, but same food prepared in hotel, that is called commodity. Are you clear? It means commodity means which things are used for commercial trading purposes, selling purposes. So, they are called commodity. Most probably we have been used commodity word in economics. Goods means, so for the domestic purposes, we are using that things for domestic purposes. So, that is called goods. Are you clear? The difference between goods and commodity, but overall you may write same thing.
no doubt. If you write goods, it is also correct. If you write commodity, it is also correct. But in economic point of view, a little bit different. I just tell you. Clear? ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲି ତୁମକୁ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଗୁଡ୍ସ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ କମୋଡିଟି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଓକେ ସୋ वी मूव टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स so what are the categories of goods we will get in your day to day life in your market transactions we are getting different types of goods are there material non material goods free goods economic goods consumer goods capital goods perishable goods durable goods final goods intermediate goods public goods private goods complementary goods substitute goods normal inferior and different goods so we will discuss one by one so these are the types of goods many more goods also there but according to our syllabus we will read here that is types of goods we will discuss one by one material goods non material goods that I have already told you in the meaning or definition of the good. Material goods are those goods which are tangible, visible, transferable in character. तार अर्थ है जो द्रव्य को आम छुई पार देखिपर स्थानांतरित कर ताहाकू मटेरियल गुड्स बोली कहा जाए इट मीन्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी टीवी सेट कैमेरा book I have given the picture look at the book economics book also material goods because you can carry that book from one place to another you can touch that book you can read that book so this is material goods which are visible tangible and transferable on the other hand non material goods so non material goods means which are not visible it is invisible intangible and not transferable. The quality of a person, the teaching skill of a person can never be transferable. It is invisible also. You can see the teacher, but you cannot see the teaching style, the teaching methodology of the teacher. So, the teacher's teaching is non-material goods. They are otherwise known as services because it is helpful to you, it provides benefit to you, so they are called services. It is invisible, intangible. Are you clear? So, this is material and non-material goods. The material goods and non-material goods can be found in different forms. It may be consumer goods, it may be producer goods, it may be intermediate goods, it may be final goods, it may be economic goods, may be free goods. So, material and non-material goods can be found in different categories. So, we will discuss one by one in the next slide. Okay, we move to next slide. First, economic good, free goods and economic goods. So, what is free goods? Very common things. You know that free goods means so which goods are available freely by the nature. It is the free gift of nature. We can get them without any payment. We are not getting them from the market. It is not man made, it is the free gift of nature. Its supply is more than demand. यही द्रव्य को आम प्रकृति पाई था यापाई किसी आमको देय देवाक पड़ न था कि पेमेंट देवाक पड़ न था से मुक्त द्रव्य बा फ्री गुड्स बोली कह जाए कहते व्हाट आर द फ्री गुड्स सो फ्री गुड्स आर एयर सनशाइन वाटर and the other things like the free goods water sunlight I have told you already. So, these are called the free goods. Okay. But that free goods completely provided by the nature not by any man. Okay. So, that is free goods. Next, economic goods. So, which goods have exchange value in the market? They are called economic goods. It means we can get them by some payment. In free goods, supply was greater than demand, plentifully available without any payment. But in economic goods cases, so these goods are not plentifully available, they are scarce.
they are few in relation to demand. We are not getting everywhere like sunlight, we are getting them in specific areas in the market. So, their supply is less in comparison to demand. यार जोगानटा सप्लाईटा डिमांड ठारू सब बेले कम. सो वी आर परचेजिंग देम. जदि सनलाइट भाया फ्री मिलता प्लेंटी ऑफ मिलता कि किणतेनि. सो दैट इकोनॉमिक गुड्स आर दोज व्हिच आर फ्यू व्हिच आर अवेलेबल in the market with some payment. The consumer would get them by paying some money. So, they are called the economic goods. For example, the economic goods, anything you say, dress or book, furniture, so anything, whatever, pen, duster, chalks, all the things you are purchasing from the market. So, they are called economic goods. Economic goods have less supply. It is man-made. It is not free gift of nature. It is man-made. So, it is produced by a specific farm, specific industry. So, you are paying money for that because it has cost of production. यार किसी उत्पादन मूल्य रही तेणु उत्पादन जेहेतु खर्च रही तुमको मागणार देदेवे फ्री मिलबनी. तुम भावुव सर आम जो गिफ्ट देले भी मुक्त फ्री पाई गिफ्ट देले सी लोकटा किणी तेणु से तुम फ्री गुड्स नुह से इकोनॉमिक गुड्स. Okay, but that distinguished classification free goods and economic goods that I have told you, exceptions are there, some changes are there. कौन it changes अच्छी? Sometimes by the situation, by the manufacturing system, free goods are converted into economic goods. Sometimes the same thing, same commodity, but sometimes we say they free goods, sometimes we say they are economic goods. How? For example, river water in village, गाँ लोक माने नई पानी सब व्यवहार कर, they are not paying any money for that. So, river water is free goods, but the water supply by PH department in a city called as economic goods. Water सेठी गाँव में से पानी व्यवहार कर यूज कर भी से पानी आम यूज कर गाधौ व्यवहार कर बट सेठी है फ्री गुड्स एटी हूँ इकोनॉमिक गुड्स बिकॉज वी आर पेइंग वाटर बिल फॉर दैट. आम पार्क जाए बुलिले कि गोटे बाहर बुलिले जो पवन पाँच से फ्री गुड्स कि फैन लगे जो पवन पाइबा दैट इज इकोनॉमिक गुड्स. से कहूँ जे समटाइम्स द फ्री गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिक गुड्स. It means these are distinguish the classification between free goods and economic goods. We can say the free goods may be converted into economic goods, but economic goods are not converted into free goods. No. आम कहींपारे इकोनॉमिक गुड्स फ्री गुड्स हो जो एग्जांपल तुम कहली जे जन तुम गोटे तुम बर्थडे गिफ्ट दब तुम तो फ्री गुड्स बोली भाव ना. नो. सो दे आर आल्सो इकोनॉमिक गुड्स बिकॉज दैट पर्सन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. It has production cost, it has market price, clear. So, this is the difference between free goods and economic goods. So, free goods are available by the nature, free goods supply is more than demand. So, free goods are not man made, they are the free gift of nature, but in economic goods different are there. We are paying for them, it is few in relation to demand, scarce in relation to demand. It is available in the market for the consumption. Clear? Next, we move consumer goods and capital goods. So, you are using them plentifully in your home, in manufacturing sector, domestic purposes as well as manufacturing purposes. Consumer goods and capital goods. Consumer goods होची आमर उपभोग द्रव्य, उपभोक्ता द्रव्य. Consumer goods उपभोग द्रव्य, उपभोक्ता और जो उद्योक्ता द्रव्य कैपिटल गुड्स. सो द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जांपल टीवी सेट, ब्रेड, बिस्कुट, बटर, जैम, राइस, सो दे आर कॉल्ड consumer goods.
because they directly satisfy us. Suppose you are thirsty, immediately you take a glass of sharbat. So, sharbat is a consumer goods, directly you satisfy after drinking the sharbat. So, this is consumer goods. So, consumer goods may be perishable, may be durable. कंज्यूमर गुड्स रही से सांगे सांगे तुम गोटे थर खाइला नष्ट हो जाए तुम रिपीटेडली यूज कर सिंगल यूज कर मे बी मल्टीपल यूज कर सो कंज्यूमर गुड्स मे बी ए सिंगल यूज कंज्यूमर गुड और मे बी मल्टीपल यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स मल्टीपल रिपीटेडली यू कैन यूज देम आम सरबत रे थरे पीदेला सरीगला ना सरबत से सरबत मिल सेव गोटे खाईदे सरीगला मिल बट कंज्यूमर गुड्स ड्रेस यू कैन यूज इट रिपीटेडली गोटे ड्रेस को 10 थर 15 थर 20 थर पिंधुछ तेणु कंज्यूमर गुड्स मे बी सिंगल यूज कंज्यूमर गुड मे बी मल्टीपल यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स इट मे बी पेरिसेबल और मे बी ड्यूरेबल क्लियर बट व्हाट इज प्रोड्यूसर गुड्स दिस इज कंज्यूमर गुड्स व्हाट इज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स अदरवाइज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स मन रखिता ताको आमे उद्योक्ता द्रव्य बोली कहते ताले प्रोड्यूसर गुड्स कौन ना व्हिच गुड्स indirectly satisfy human wants. These goods help us to produce consumer goods. Which goods help us to produce consumer goods indirectly satisfy our needs, our wants are called as capital goods or producer goods. What are the example? Tractor, sewing machine, so they are called the producer goods or capital goods. Tractor, fertilizers, raw materials, it may be perishable, may be durable also. Machinery equipments, so they are called producer goods. ता माध्यम रे आमे जेउ द्रव्य माध्यम रे उपभोग द्रव्य उत्पादन करिथांते. For example, production of rice, use of tractor in the cultivation of fields. Tractor is the producer goods. Look at the picture, next slide. In the left side, the tractor cultivating the land. The right side picture, that is crops, paddy, rice. So, rice here is the consumer goods. Directly you can satisfy that from that commodity, but tractor does not satisfy directly. Tractor help us to produce rice. So, tractor indirectly satisfy our needs, not directly. So, that tractor is here producer goods, rice is the consumer goods. Okay. So, tractor is here durable goods. I have told you consumer goods may be durable, may be single use, may be multiple use, may be perishable. I have told you. Fertilizers also a producer goods, a capital goods, but fertilizer you can use single time in the agricultural field. थरे पकेदेला से सारा सरीगला ना से सारा पुणी आउ थे बाहर से बाहर ना कि ट्रैक्टर को तुम कौन कर मल्टीपल यूज बहुत यूज कर फिक्स्ड एसेट दैट इज फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ताकू आम बारंबार ए वर्ष यूज कले आर वर्ष यूज कर बारंबार कल्टिवेशन कर लैंड से मल्टीपल यूज ट्रैक्टर मेसिनरी इक्विपमेंट्स बट जोटा तुम कहली रॉ मटेरियल्स फर्टिलाइजर्स सो ता सिंगल यूज थरे यूज करेगा सरीगला सी कैपिटल गुड्स क्लियर टू द पॉइंट सो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स मीन्स व्हिच गुड्स डायरेक्टली सैटिस्फाई कैपिटल गुड्स मीन्स व्हिच गुड्स इनडायरेक्टली सैटिस्फाई आवर वांट और नीड क्लियर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर पेरिसेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स टेकी आगुरी कहली जे पेरिसेबल गुड्स कैपिटल कंज्यूमर गुड्स मे बी पेरिसेबल may be durable. So, that we will discuss what is perishable, what is durable goods. Perishable or non-durable, durable goods. Perishable goods or non-durable goods refer to those goods that have a single use. Single use. आमे ताको थरे व्यवहार करते. We cannot store them for a long period of time. We cannot use them repeatedly. So, they are called perishable goods. Such goods supply is fixed in the market many times.
It is normally available in very short period market. I have told you many things, but what are the example of that? The examples are fish, meat, vegetables. So, these are called perishable goods. Cement, perishable goods. आमे ताको गोटे थर व्यवहार करिबा. Which commodities are used for the single case? गोटे थर रे व्यवहार कले नष्ट हो. आमे माछटक आनले खाइले सरी गला. सेटा पेरिसेबल गुड्स. वी कैन नॉट स्टोर देम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आमे ताको अधिक दिन पर्यंत संचय करि पारिबे. तुम कहउथो साहेब भी पेरिसेबल गुड्स, पोटैटो, वेजिटेबल्स सो कोल्ड स्टोर मान रहिला नहीं. किंतु तार नेचर कहूँ हम तो अधिक दिन रखिपारे ना. आम सीना साइंटिफिक वे रखिपुं किसी दिन पर्यंत, तथापि से किसी डैमेजेस वी आर गेटिंग. किंतु आमे ताको सबुदिन पर्यंत रखा संभवपर नुह. लाइक ड्यूरेबल गुड्स बहुत दिन पर्यंत रहीपर विदाउट एनी स्टोरेज मेथोडोलॉजी. आमर यू आम कहती जे नॉर्मली दिस गुड्स आर अवेलेबल इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट व्हेयर सप्लाई इज फिक्स्ड. मु जने माछ बेपारी माछ नहीं जी गली बिक्री करदेली पलि आसली. मोर सप्लाईटा फिक्स थाए बिकज इट इज पेरिसेबल गुड्स. मुझे अधिक परिमाण गच्छित कर रखिपारि ना मो स्टोर रे. क्लियर? दैट इज पेरिसेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स. So next, yes, another thing is there. So perishable goods satisfy the present want. I have forgotten to say that concept. Perishable goods satisfy the present want of the individual. So we can keep them for the future use because it cannot be stored for long period of time. आमे ताको भविष्य व्यवहार पई रखंती नाही. आमे तो केवल प्रेजेंट यूज रे अधिक प्रिफरेंस देकी रखंती. जो कोल्ड स्टोर रे कहि पारो जे आमे सबुदिनिया कोबी पाउचंदी, सबुदिनिया पाउचंदी कोल्ड स्टोर मिलुची, बट नेचर इज नॉट दैट. साइंटिफिक वे रे आर्टिफिशियली आमे तो रखुचंती हला. किंतु बाय नेचर आमे तो प्रेजेंट यूज रे बेसी व्यवहार करंती, नॉट द फ्यूचर यूज. क्लियर? सो मूव टू द सेकंड केस, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जस्ट रिवर्स ऑफ द पेरिसेबल गुड्स. दीर्घस्थायी द्रव्य. दीर्घस्थायी द्रव्य आमर जो क्षयशील द्रव्यर विपरीत. सेठी कौन कहली? सो व्हिच गुड्स आर यूज्ड फॉर सिंगल टाइम बट ड्यूरेबल गुड्स refers to such commodities, such goods which can be used repeatedly again and again for a long period of time also. We can use them. They are called durable goods. It means the examples are furnitures, bike, TV set, study material. So they are durable goods. आमे ताको बहुत दिन पर्यंत व्यवहार करि परिबा. किछि ड्यूरेबल गुड्स अछि वर्ष 2 वर्ष 6 मास हम यूज करबे तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स मध्ये कहला जाय. ला लाइफ स्पान कम थाए. ओटे ड्रेस किबा स्टडी मटेरियल खाता पत्र बही पत्र ए वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष मैक्सिमम हमें यूज करि परिबा. सो दे आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स हमें ओटे फर्नीचर्स कहले, सोफा सेट कहले 10 वर्ष पड़े एसी 10 वर्ष 15 वर्ष हम यूज करिबा. My point is that are the durable goods. So durable goods can be stored up for a long period of time. Durable goods help us to satisfy our present as well as future needs. आमे हमर वर्तमान रो अभाव एवं भविष्यत रो अभाव को परिपूर्ण करिया पई ए गुड्स हमु निहाती दरकार बा आवश्यक हेता. गोटे घर कले एबे तो रहिबा घर रे आमे आम पर पुरुष आम नेक्स्ट जनरेशन समस्त भी से घर रोच 50 वर्ष 60 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष चल. बट इट इज नॉट फाउंड इन कंज्यूमर गुड्स. आज माछ आनिछ तो तुम पुरुष खाई ता पर पुरुष खाइबे एटा संभव नुह बिकज दैट सिंगल यूज. वी कैन यूज देम फॉर वंस. जेतोल भी यूज करो ताको आनिछ कोल्ड स्टोर आन जेतोल भी यूज करो थरे यूज करिवो किंतु आकु तुमे रिपीटेडली यूज करिवो. सो दैट द ड्यूरेबल गुड्स आर यूज्ड repeatedly again and again. Clear? My point is that durable goods
help us to satisfy both present and future needs, but consumer goods satisfy only our present needs. We can never store them for the future purpose of consumption. आम भविष्य कंजप्शन करने उपभोग करने केवे भी सजेगी रखती ना थे आणिकी यूज करते किंतु ड्यूरेबल गुड्स दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर तो ड्यूरेबल गुड्स आर नॉर्मली मोर कॉस्टली दैन द पेरिसेबल गुड्स आम गोटे गोटे घर करने गले 50 लाख 60 लाख गोटे कार किणा गले 10 लाख 12 लाख टका बहुत एक्सपेंसिव माछ आम से माछ गोटे 10 वर्ष खाଇବା से पैसा कि 20 वर्ष खाଇବା तेणुक यहीटा एक्सपेंसिव आम जेहेतु एक्सपेंसिव आम थे किणिकी बहुत दिन यूज करने प्रिफर करवा निश्चित भाव में बुझीगला। So next, final goods and intermediate goods. आमर शेष द्रव्य प्रारंभिक द्रव्य इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स कौन इंटरमीडिएट गुड्स कौन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइनल गुड्स ऑलवेज रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री सो द रॉ मटेरियल्स inputs are always remain in the production boundary. What does it mean? Final goods means which goods are ready for consumption. Ready for consumption. Dress, shirt. So shirt is ready for consumption. गल खोल पिंधिल भात हो सारा गल खाइल. So that is ready for consumption. So hotel में लिखा है तो meals ready. So that is final goods, ready for consumption. But intermediate goods, they are called also inputs. The intermediate goods help us to produce final goods. Such goods are used in different stages of production. Which goods are used in different stages of production to produce final goods? They are called intermediate goods. जो द्रव्य को आम उत्पादन विभिन्न पर्यायर व्यवहार करती कहीं व्यवहार करती ना शेष द्रव्य पाइबा फाइनल गुड्स पाइबा सो दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. वन एग्जांपल आई टेल यू जस्ट सपोज लुक एट द व्हाइट बोर्ड bread. Bread is the final goods. To find bread, we have to move some stages of production. So first suppose wheat, then wheat flour, then dough, then bread. Clear? So these are called intermediate goods. Inputs in different stages of production. First, wheat is the intermediate goods of the wheat flour. Wheat flour is the intermediate goods of dough. Dough is the intermediate goods of bread. So bread is the final goods. My point is, in different stages of production, we have been used such commodities. They are called intermediate goods. आमे प्रोडक्शन पर्यायर आ गोटे एग्जांपल कहूँ ड्रेस. ड्रेस आम कौन कर प्रथम रॉ कॉटन, देन थ्रेड, देन कॉटन, देन गारमेंट. आगे आम पाइबा जो कपा, कपार सूता, सूतार कपड़ा, कपड़ारू ड्रेस. सो ड्रेस इज द फाइनल गुड्स. बट ये जो स्टेजेस देखिए आसुचंती आम ईच एंड एवरी स्टेज वी आर गेटिंग रॉ मटेरियल्स और दे आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स. So it is very difficult which one is the intermediate final goods. Final goods means which are ready for consumption, but sometimes in the macro analysis, macro point of view, it is very difficult to say. So it may be the final goods, it may be the final goods. But overall, to avoid the problem of double counting,
तो ओवरऑल वी कैन से सो दैट इज ब्रेड इज द फाइनल गुड्स. सो व्हिच गुड्स आर रेडी फॉर कंजप्शन बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर उपभोक्ता जो द्रव्य को आउ किसी तार प्रोसेसिंग नथियो बाकी नथियो आनिबो व्यवहार करिवो यूज करिवो ताको हम कहबा फाइनल गुड्स. जोड़ा को आमे प्रोसेसिंग करिया को बाकी अछि बा प्रोसेसिंग करिबा कंजप्शन करिया पई ताको ही कहबा इंटरमीडिएट गुड्स. तेणु ये जो एठी देखिबा को गले लुक एट द व्हाइट बोर्ड हियर. सो दिस इज द प्रोडक्शन बाउंड्री. इट मीन्स हियर दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. In the manufacturing sector, we are getting the intermediate goods. Is the processing of it. Intermediate goods. It processing of. Industry रे processing of. आमर गहम गहमरो अटा अटारो ये सब processing of विभिन्न फार्म रे. मार्केट रे को मिलिबो. So they are called, they will remain in the production boundary. को मन रे production boundary. Intermediate goods होइबो production boundary. बाहर को के जीवो. बाहर को जीवो final goods. कारण फाइनल गुड्स कोडी मिलिबो मार्केट रे मिलिबो. सो वी कैन मूव फाइनल गुड्स इन द मार्केट. वी कैन मूव टू गेट देम इन द मार्केट. सो फाइनल गुड्स नॉर्मली विल रिमेन बियॉन्ड द आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री प्रोडक्शन जोन. बट इनसाइड द प्रोडक्शन जोन व्हाटएवर वी फाइंड दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर द डिफरेंस. क्लियर द मीनिंग. बुझी पालो जोड़ा आमको रेडी करने कंजप्शन करने रेडी अच्छी से फाइनल गुड्स. जहाँ आम प्रोसेसिंग करवा प्रोडक्शन करने फाइनल गुड्स ताको आम इंटरमीडिएट गुड्स कहवा. क्लियर जीवा नेक्स्ट. यस. सो इट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. दैट इज पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स. सो पब्लिक गुड्स सब तुम जाऊ सब पार्क रोड रे चलके जाऊँ स्कूल कॉलेज सब डेली यूज कर से गुड्स को. सो व्हाट इज पब्लिक गुड्स. आम तो डेली यूज कर जानते पब्लिक गुड्स कौन ना. पब्लिक गुड्स आर दोज व्हिच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट. जो द्रव्य को सरकार द्वारा परिचालित और मालिकाना रे चलता है. सरकार ताको परिचालना करते सरकार मालिक होता पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ताको आम पब्लिक गुड्स बोली कहते नॉर्मली. बट इट इज नॉट एनफ टू डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड्स. वी विल डिस्कस मेनी कैरेक्टर्स आर देयर. सो माय पॉइंट इज फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द गुड पब्लिक गुड्स दैट इज व्हिच गुड्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट or local bodies called as public goods. The examples first I tell you. What are the example? So public goods are national highways, college, school, park, Hirakud Dam. So all the things are public goods. Why they are called public goods? खाली कौन सरकार मालिक हेले पब्लिक गुड्स हम किसी किसी जगह प्राइवेट मालिक अच्छी ताको पब्लिक गुड्स कहवा. देखिए आगु डिस्कशन कर कहवा. तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक गुड्स. व्हाट आर द नेचर ऑफ द पब्लिक गुड्स. ना पब्लिक गुड्स आर इंडिविजिबल, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन proportional payment to benefits. One by one we will discuss. What are I tell you? So I tell you, first it is indivisible. Public goods are indivisible. आमे ताकू विभाजित करि परिबा ना. जो गणद्रव्य ताकू ओडिया रे कहंती गणद्रव्य बा सरकारी द्रव्य ताकू आमे ताकू कौन करिबा विभाजित करि परिबा ना. अलगा डिवाइड करि परिबा ना. इट इज इंडिविजिबल इन कैरेक्टर. दे आर जॉइंटली कंज्यूम्ड. समस्त से को यूज करिवे. मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, they are paying high amount of tax to the government. So they never claim specific road for them. सेमान कहबेन जे हमु डिवाइड करी रास्ता दियो ना, कारण एटा पब्लिक गुड्स. समस्ते ताकू समान भाव यूज करेंगे. डिवाइड हो पार ना.
that is indivisible in character. Next is non-rival. यही द्रव्य को उपभोग करने प्रतिद्वंदिता न थाए, कंपटीशन न थाए. Each and everybody are eligible to enjoy that commodity equally. गवर्नमेंट जहाँ नीति नियम अच्छी, गवर्नमेंट जहाँ गुड्स एंड सर्विसेस रही, आमे समस्ते एक भावे उपभोग करिवार अधिकार अच्छे. So it is non-rival in character. Then non-exclusive. Non-exclusive means the consumption of public goods can never be excluded at any situation, any circumstances. जणे से सुविधाटा पाइब आउ जणे सेटा पाइब नाही, एटा केबे संभव नुह. आमे पब्लिक गुड्स कंजम्पशन रे कहार को बाद दे परिबा नाही, कहा को बाहर करि परिबा नाही, कहा को एक्सक्लूड करि परिबा नाही. इट बिकॉज इट इज नॉन एक्सक्लूसिव. जहाँ को आमे एक्सक्लूड करिबा संगे संगे से कोर्ट आश्रय नहीं पारे. तुम्हें जदि चाहूच कॉलेज रे पढ़िया पई, तुम कॉलेज ना तुम्हें पढ़िबो ना कॉलेज रे जा आ कोठी पढ़िबो. तुम जदि एलिजिबिलिटी अच्छी, तुम्हें जदि एलिजिबल सेठी पढ़िया पई, तुम केही भी अटकई पारिबे नाही. सो इट इज नॉन एक्सक्लूसिव. तुम्हें रास्ता रे जीव, गाड़ी किनिच, रास्ता रजिस्ट्रेशन करिच, रास्ता रे जीवार अधिकार तुम अच्छे, केही तुमको एठु बाहर करि परिबे नाही. तुम्हें रास्ता रे जाई परिबो नाही, एटा ओडिशा रास्ता, तुम्हें आंध्र रु गाइस जाई परिबो नाही. नो, नेवर. So that is public goods. So one more important thing is there. In case of public goods, payee and beneficiary are different persons. The payment is non-proportional to the benefit. What does it mean? The payee and beneficiary are different persons. May not the same person. May not the same person. जे पेमेंट करुची से बेनिफिट पाइबो, यार गारंटी नहीं. And also the payment is not proportional to the benefit. किए अधिक टैक्स दउची से अधिक बेनिफिट पाइबो, किए कम टैक्स दउची कम बेनिफिट पाइबो ना. अधिक टैक्स जे दउची से जति कि जो रोड रे जीवो, कम टैक्स दउथवा लोकटी मध्ये से रोड रे जीवो. जे अधिक टैक्स दउची ता पई कि स्पेशल बेनिफिट नहीं, कि ता पई कि हायर बेनिफिट नहीं सोसाइटी पई, पब्लिक गुड्स की जोगो नहीं. So the payment and benefit, they are non-proportional. One person will pay, another person will get the benefit also. The payee and beneficiary may be the different persons. जने पेमेंट करिवो, आउ जनता बेनिफिट पाइबो. किछि लोक अछंती टैक्स दउ ना, जो करिवो हमर गवर्नमेंट स्लैब अनुଯାयी, इनकम टैक्स रूल अनुଯାयी, who are below the 5 lakhs per annum income, they are not paying direct tax, they are paying only indirect tax. तेणु से जो किसी गरीब लोक से टैक्स कम टैक्स दौरान, किसी भिकारी टैक्स दौना, किंतु से समान पब्लिक गुड्स उपभोग कर. अधिक टैक्स दिंतु बा न दिंतु, से जन अधिक टैक्स दौ बा कम दो, जहाँ भी हो, किंतु समस्ते समान पब्लिक गुड्स उपभोग करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रपोर्शनल टू बेनिफिट. पेई एंड बेनिफिशियरी में डिफरेंट पर्सन. जने अधिक टैक्स देला, जने पेमेंट कला, बेनिफिट को आउ जने पाइला. आ गोटे एग्जांपल कहूँ, जने टैक्स पेयर पेमेंट कला, से जो पेमेंट कला सेटा इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट तो खर्च कला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. गोटे रास्ता तैयारी कर खर्च कला, से जो आ टंकाटा गोटे रास्ता तैयारी लगिला, से रास्ता तैयारी किए एम्प्लॉयमेंट पाइबो, गरीब लोक माने जो माने सब लेबर काम करेंगे, से लेबर माने बेनिफिट पाइले, तांकर इनकम जनरेशन होला. पेई होला जणे पब्लिक गुड्स द्वारा बेनिफिट आउ जने पाइला, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी. बेनिफिट आउ जने पाइला, जन लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होला. सो माय पॉइंट इज दैट payee and beneficiary may be different person. Public goods always introduce positive externalities. So negative also there, but positive externalities more. Okay. So this is the public goods. So next is the private goods. जन द्रव्य.
one thing I have forgotten to say. That concept is public goods may be pure public goods, may be semi public goods. Pure public goods, defense. There is no other intervention. केवल सरकारी सब पूरा प्योर पब्लिक गुड्स. बट सेमी पब्लिक गुड्स मीन्स हेल्थ एजुकेशन. सो प्राइवेट इंटरवेंशन रही सब आम नर्सिंग होम रही प्राइवेट स्कूल कॉलेज रही खाली गवर्नमेंट मत ना कि डिफेन्स एटा ना कि प्राइवेट डिफेन्स ऑर्गेनाइजेशन ना. सो दैट इज प्योर पब्लिक गुड्स. हिरो जी सेमी पब्लिक गुड्स कौन ता डेफिनेशन होगा बहुत सब हायर स्टडीज कले जान. बट यू जस्ट नो डिफेन्स इज द प्योर पब्लिक गुड्स एंड दे आर द सेमी पब्लिक गुड्स. क्लियर. नेक्स्ट मूव टू द प्राइवेट गुड्स. ओके, private goods just opposite of the public goods. Private goods means which goods are owned and operated by private individual or group of individuals. They are called private goods. ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜଣେ ବା କିଛି ଗ୍ରୁପ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ जनद्रव्य बा प्राइवेट गुड्स बोली कहते. ओके, सो प्राइवेट गुड्स आर अपोजिट ऑफ द पब्लिक गुड्स. दे आर डिविजिबल, दे आर राइवल, दे आर एक्सक्लूसिव and proportional to the payment. One more important thing is payee and beneficiary may be the same person, which was not in public goods. Payee and beneficiary might be same. First we will discuss it is divisible. Private goods are divisible. ताको हम भाग करि परिबा प्राइवेट गुड्स को अलगा करि परिबा. जहाँ आमर अच्छी प्रॉपर्टी आम ताको पांच भाग करि परिबा. आमर जहाँ हाउस मटेरियल रही किसी घर सरंजाम रही अलग कर. इट इज डिविजिबल, विभाजित कर प्राइवेट गुड्स. इट इज राइवल ऑल्सो. प्राइवेट गुड्स पाइबा प्रतिद्वंदिता थाए भितर. मु बड़ भल घर करी, मु गोटे बढ़िया कार किणी, मु बड़ा इंपोर्टेड मोबाइल इंपोर्टेड कार धरबी. सो दे आर कम्पिटिटिंग राइवल one to another. प्रतिद्वंदिता चले भितर in the neighbor to demonstrate their status in the society. Consumers are competing, they are rival to get the private goods. समस्ते केमि उच्च बहुत आमको पसंद करेंगे, लोक मैंने खातिर करेंगे, तो दे आर कम्पिटिटिंग, दे आर राइवल वन टू अनदर. राइवालिटी लोक लोक मार दौरान ऊपर जावाई. सो दे आर राइवल इच अदर. Non-exclusive, exclusive here. The private goods are exclusive in character. Exclusive means one will get, another is not. ताक बाहर कर दिया. जने पाइला सेटा आउ जने सेटा पाइबो नाही. ए राइवल क्षेत्र रे जने जितिला जने हारला. So it is exclusive. जे हारी गला, जे न पाइला से कमोडिटी से एक्सक्लूड हो गला, बाहर गला. All are not jointly consumed. All the commodities are not jointly consumed. In case of private goods, they are exclusive in character. So one will get, another is not getting that. So this is called exclusive in character. Next is the payee and beneficiary may be the same person. That is very important. In case of private goods, payee and beneficiary same person. जी पेमेंट करिवो से बेनिफिट पाइबो. मु जदि 10 लाख दे कार किनिबी मु तार बेनिफिट पाइब. मु जदि गोटे 5000 दे शर्ट किनिबी मु तार बेनिफिट पाइब. मु 5000 शर्ट किन दे गाँ लोक बेनिफिट पाइबे. ये संभव कि मु पे मु पेमेंट करछि तार बेनिफिट मु पाइबे. बट इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स मु टैक्स दउछि बेनिफिट आउ जण को जाउछि. गरीब लोक मार पाउछन कि साधारण लोक मार सब समस्त पाउछथि. मु एका पाउ नाही तार बेनिफिट. सेठी पे एंड बेनिफिशियरी are different persons, may be different persons, may be same, may be different persons.
But here in case of private goods, pay and beneficiary same person. जे पेमेंट करिवो से ही बेनिफिट पाइबो. Okay. Another important thing also there. So that is the payment and benefits are proportional. मु जो रेट रे पेमेंट करी से रेट रे बेनिफिट पाइबी. जदि मोर पेमेंट कम कली से अनुसार खराब जिन बेनिफिट पाइबी. जदि अधिक भल लग्जरी कार किनली भल बेनिफिट पाइबी. सो पेमेंट एंड बेनिफिट आर प्रोपोर्शनल. So another is the complementary goods and substitute goods. Yesterday we discussed complementary one, substitute one, so same concept are there. So complementary goods I have told you already in the last class we discussed. When two or more goods jointly satisfy human wants, they are called complementary goods. Individually, independently, a single good can never satisfy your need. Jointly satisfy, so they are called joint demand also, joint demand goods. For example, DVD player. खाली डिविड थी डिविड प्लेयर नथिबो किछि काम दबो कि पेंसिल थी एरेजर नथिबो कि एरेजर थी पेंसिल नथिबो किछि काम दबो कि. सो दीटा जॉइंटली दरकार हमको. सो टू गुड्स जॉइंटली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, नॉट वन कमोडिटी. सो दैट इज कार एंड पेट्रोल. सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स. वन कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट अनदर. क्लियर. सो द मार्केट डिमांड हियर डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाई यू विल रीड इन द डिमांड चैप्टर पढ़िबा खाली जानि थाओ जे डिमांड कर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में डाउनवर्ड हुए. प्राइस आउट डिमांड रिलेशन इनवर्स रहे. कहीं रहे नेक्स्ट क्लास कहवा डिमांड चैप्टर रे. सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स व्हेन ए कमोडिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कमोडिटी, दैट इज सब्स्टिट्यूट. व्हेन द गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर गुड्स फॉर द सेम पर्पज ऑफ यूज. शोष लगिला आम सरबत पीवा कि लसी पीवा, कोल्ड ड्रिंक्स पीवा कि जेकोसी लिक्विड पीवा. सो दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट. गोटे कमोडिटी और कमोडिटी को अल्टरनेट कर सब्स्टिट्यूट करते. सो टी कॉफी टू कंपनीज ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट अमेजन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट. आम चाहिए फ्लिपकार्ट आने ऑनलाइन शॉपिंग कर अमेजन कर. सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके. सो इन सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस एंड डिमांड आर रिलेशन. सो द डिमांड कर्व इज upward sloping. Why it is upward sloping? How? That discussion आम डायग्राम पछरे करिया. It is a demand chapter. खाली note that. That is called competitive demand also. Substitute goods are called competitive demand. Clear? So look at the examples here. So Pepsi, Coca-Cola, they are substitute. आम Coca-Cola पीले ना Pepsi पीवा. Coffee, tea, substitute. Here is DVD अच्छी, DVD player अच्छी. ये है complementary. एपटे कार एंड पेट्रोल टंगा दिया होची कार. ये होची complementary goods. Look at the picture. Yes, normal goods, inferior goods and given goods. Normal goods means, so which goods are normally used and it has direct relationship with income. Income effect is positive. ता अर्थ हला इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो. जो गुड्स रो ताको हम नॉर्मल गुड्स बोल कहंती. साधारणतः व्हीकल्स, फर्निचर्स, ड्रेस मटेरियल जहार इनकम जते अधिक हबो से जिनिस को अधिक किनिबो. सो इनकम पॉजिटिव इफेक्ट, सॉरी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. ये आमर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव थाए. सो नॉर्मल गुड्स कहले आम कौन बुझा जहाँ कहली इट मे बी नेसेसरी गुड्स, इट मे बी लग्जरी गुड्स, इट मे बी कंफर्ट गुड्स. आम लास्ट क्लास डिस्कसन कर नेसेसरी हो पारे, कंफर्ट हो पारे, लग्जरी भी हो पारे. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स. ओके. inferior goods important. So inferior goods means low quality product where income effect is negative. Income बढ़िले you are not purchasing more of that commodity. Income रे कम आमे के किनते. जेतरे income अधिक हो we will move to the branded product. We will not purchase low quality product. So inferior goods normally low quality product. Income effect is negative. एटी income effect negative थाए. होला कोन example low quality goods बाजरा, डालडा, घी, low quality vegetables. So these are called what? Inferior goods. So inferior goods substitute easily market रे मिल जाए. जहाँ हला हमें adjust कर दवा. भल घी नहीं ये डालडा घी नहीं चले दवा. Inferior goods substitute बहुत मागना रे available होई थाए market रे. Giffen goods, a special type of inferior goods. So that goods first was introduced by Scotland economist Sir Robert Giffen. से इटो introduce करते Giffen goods को. A special type of inferior goods. Normally, that goods are used by
poor family in Indian context, poor people mostly. It means here the price effect is positive. What does it mean? When price increases, demand also increases. Okay. So, look at the example of the given goods. बस देखुव बस देखिए भाव जे यहाँ कौन बस सारा गोटे गिफेन गुड्स ना जो ट्रांसपोर्ट आम कार न जाकि बस जा बस जा यहाँ गिफेन गुड्स जर्नी बाय बस. सो नेक्स्ट वैल्यू एंड प्राइस will the concept value and price. Value means what? Value means the usefulness of any good of a consumer to the consumer. गोटे एग्जांपल कहूँ तुम जापर भैल्यू और प्राइस कौन. तुम्हें मार्केट को गल गोटे इकोनॉमिक्स बही किणल इकोनॉमिक्स बही किणल पढ़ल पढ़ला पास कर से बहीर भैल्यूटा तुम जी इंपोर्टाट से सेलर से ना सेलर कौन से प्राइस तुम्हें किणिक आन 100 टका दे. सो दैट इज द प्राइस. बट जो बेनिफिटा तुम पाइल से बही से भैल्यू. तेणु यूजफुलनेस ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड वैल्यू. The benefits whatever you get from that commodity is called value. So, value may be value in use, value in exchange, value in use and value in exchange. So, value in use means the usefulness of the commodity, value in exchange means what? The exchange value of a commodity, when a commodity is exchanged in terms of another commodity. So, that is value in exchange. Okay. So, value in exchange, that value in exchange may be expressed in terms of money. So, that is called price. When the exchange value is expressed in terms of money, that is called price. For example, 1 kg rice is equal to 2 kg of wheat, that is exchange value. We can exchange a commodity in place of another commodity. The value of a commodity can be exchanged in terms of another commodity. That is value in exchange. So, the value in exchange and value in use, that was classified by Adam Smith, you remember. So, the price I have told you already. Price means that when the value of a commodity is expressed in terms of money, that is price. Price is determined by demand and supply in the market. Price is fluctuating in character. So, it may increase or decrease, that is depending upon the market structure. Okay. So, this is the distinguish I have told you already, the value and price, what is value, what is price I have already told you. So, value may be fixed, it is constant for all the human being, but price is different from market to market. So, benefit will remain same. Price and cost are calculated numerical form, but value can never be calculated and value को measure करी परिवानी. So, in this chapter we know what are the concept of goods, value, price. We are using them in day to day life. Most probably always you think about the value of the commodity and give value such things which have priority in our country, in our economy, in our society. Okay. Thank you.